नमस्कार, मैं अंसारुल हक। दुनिया भर में चंपारण या मोतिहारी को लोग मुख्य रूप से दो वजहों से जानते हैं। पहला बापू की कर्मभूमि और सत्याग्रह की धरती के रूप में, तो वहीं दूसरा दुनिया के महान लेखकों में शुमार अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े लेखक जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली के रूप में। आज मिलेनियम राइटर जॉर्ज ऑरवेल की 118वीं जयंती है। जॉर्ज ऑरवेल की जयंती के मौके से एचटीवी न्यूज पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ लंदन से लाइव जुड़ रहे हैं। वह कोई और नहीं, जॉर्ज ऑरवेल के पुत्र रिचर्ड ब्लेयर हैं। रिचर्ड ब्लेयर साहब, एचटीवी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, you're most welcome on HTV News. Yes. And please, it's difficult just to hear you. आज के इस पैनल में ऑरवेल जयंती पर आज उनके पुत्र रिचर्ड ब्लेयर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ कुछ और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा दें। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वजीत मुखर्जी। विश्वजीत मुखर्जी जॉर्ज ऑरवेल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही ख्याति मिली है। इसके अलावा प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब एमएस कॉलेज मोतिहारी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड, ये भी जुड़े हुए हैं। और शाहरुख खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शाहरुख खान महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं इंग्लिश विषय में। और एक और खास मेहमान जो लंदन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्वेंटिन कोप, चेयरपर्सन ऑफ द ऑरवेल सोसाइटी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जो है शाहरुख खान के पास पहुंचते हैं। शाहरुख, रिचर्ड ब्लेयर साहब का आप इस्तेमाल करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद एक जो एचटीवी न्यूज के हमारे सहयोगी सादिक ने एक रिपोर्ट तैयार की है जॉर्ज ऑरवेल की आज जयंती के ऊपर, तो उसको भी हम दिखाएंगे। जी शाहरुख। Yeah, thank you so much, sir. Good afternoon, viewers, and welcome to this brief panel discussion organized on the behalf of HTV News. On this auspicious occasion of 118th birth anniversary of the classical author George Orwell, we have with us his son, Mr. Richard Blair, as a chief guest. Along with him, the other panelists are Quentin Kopp, chairman of the Orwell Society and son of George Kopp, who is best known for his friendship with George Orwell, whom he commanded in the Spanish Civil War. Along with him, we have Professor Muhammad Iqbal Hussain, head of the Department of English at MS College, Motihari, and the famous documentary maker Vishwajit Mukherjee, who has also made a documentary film on the birthplace of George Orwell, situated in Motihari. Now, let me introduce you briefly to the chief guest of today's session, who is Sir Richard Blair. So, Sir Richard Blair, after finishing his career as a businessman, has dedicated his time to preserve the memory of his father, and he spoke publicly for the first time about his childhood in an interview organized by Sunday Times Oxford Literary Festival, and the interview has been taken by DJ Taylor, sir. In the following year, he worked as a group of Orwell academics and enthusiasts who inspired the founding of the Orwell Society, of which he is both patron and trustee. 2 years later, Blair was elected trustee of the Orwell Foundation and Orwell Youth Prize, of which he is patron. He is also engaged in more hands-on roles by hosting lectures through both the Orwell Society and Orwell Foundation, publishing articles, sponsoring the Orwell Prize, and conducting annual excursions to his childhood house at Burnhill, where his father wrote the classical novel 1984. Thank you so much, sir, for joining us, and it's an honor for me that I'm sharing the screen with such an important figure. Once again, a warm welcome on the behalf of STV News and the panelists. And before moving on to any sort of discussion, I would like to present before you a short report on the birthplace of Sir Eric Arthur Blair, or also known as by his pen name George Orwell, and the present condition of his house.
Sir, can you please show the visual? बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख, और इस बीच हम अपने दर्शकों को एक और चीज साझा कर दें कि आज के इस पैनल डिबेट में चूंकि रिचर्ड ब्लेयर साहब की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, तो हम लोग जो तमाम बातें उनसे करेंगे उसका हिंदी अनुवाद शाहरुख से हम जानेंगे। और प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब और विश्वजीत मुखर्जी साहब, ये दोनों जो है बहुत सारे सवाल हैं जो रिचर्ड ब्लेयर साहब से करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, आज की ये ताजा रिपोर्ट देखते हैं सादिक से। में आपका स्वागत है। गुलामी की बेड़ियों में कैद हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंकने पर आमादा था, क्योंकि अब सर से पानी काफी ऊपर तक चला गया था। ऐसे में आजादी के मतवालों ने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी। देश भर में लड़ाई की बिगुल फूंक दी गई। फिर क्या था, देश के अलग अलग हिस्सों में जमहूरियत को लेकर आवाज बुलंद किए जाने लगे। ऐसे में इस लड़ाई में बिहार की चंपारण की धरती भी अपनी अग्रणीय भूमिका निभाई। यहाँ के नीलहे किसानों का भरपूर समर्थन एक खदरधारी नागरिक को मिला। फिर क्या था, उस अहिंसा के पुजारी महात्मा ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर गोरों को यहाँ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चंपारण की यह धरती तो उसी दिन धन्य हो गई जब इस महापुरुष महात्मा गांधी ने सन 1917 में यहाँ अपना कदम रखा। अब चंपारण की यह धरती इतिहास के पन्नों में गांधी जी की कर्मभूमि के नाम से सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। 20वीं सदी में जब मुल्क अंग्रेज दमनकारी शासन के खिलाफ जमहूरियत का लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त कई क्रांतिकारियों ने अपने कलम से भारतीयों पर हो रहे अत्याचार की दास्तां लिखनी शुरू कर दी। यह दास्तां थे साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे जॉर्ज ऑरवेल। इनका असल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर भी था। थे तो ये एक अंग्रेज, लेकिन साहित्यकार होने के कारण इन्होंने कई मायने में गांधी जी को समर्थन किया है। इन्होंने हमेशा से साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी लेखनी को आवाज दिया है। एनिमल फार्म और 1984 जैसी विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों को भी इन्होंने ही लिखा है। आपको बताते चलें कि इस महान मिलेनियम राइटर का चंपारण से न केवल गहरा नाता रहा है, बल्कि इसी चंपारण की मोतिहारी इनकी जन्मभूमि भी रही है, जहां इस वक्त हम खड़े हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह चंपारण एक ओर जहां महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, तो वहीं दूसरी ओर जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली भी रही है। करीब 2.5 एकड़ में फैला हुआ मोतिहारी शहर के बीचों बीच सत्याग्रह पार्क का जस्ट बगल वाला यह परिसर, खंडर नुमा ये भवन भी गवाह है इस बात का कि अंग्रेज सरकार में अफीम विभाग में सब डिप्यूटी एजेंट रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर के यहाँ 25 जून यानी आज ही के दिन 1903 को एक लड़का पैदा हुआ था, जो आगे चलकर जॉर्ज ऑरवेल के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की इस बात को सन 1983 के बाद लंदन से आए एक पत्रकार यान जैक ने अपनी रिपोर्ट में उछाला। साल 1984 में उनकी रिपोर्ट देश विदेशों के अखबारों में छापी गई। तब जॉर्ज ऑरवेल की बर्थ प्लेस के बारे में पता चल सका। फिर क्या था, विदेशी पत्रकारों का यहाँ तांता लग गया। तब स्थानीय कुछ बुद्धिजीवियों को भी इस जगह की अहमियत का एहसास हुआ। सन 2003 में पहली बार इस
शताब्दी साहित्यकार के 100वें जन्म दिवस पर स्थानीय रोटरी लेक टाउन मोतिहारी ने इस प्लेस को संरक्षित करने और इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। तब से लेकर यहाँ इनके हर जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। सन 2010 में बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग ने इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था और इसे संग्रहालय में विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की भी बात कही थी। खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। सन 2014 में इसके भवन का नवीकरण का काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक इसे संग्रहालय और पुस्तकालय में विकसित करने का काम पूरा नहीं किया जा सका। दिन ब दिन शराबियों और जुआरियों का यह प्लेस अड्डा बनता जा रहा है। कुछ महीने पहले ही असामाजिक तत्वों द्वारा इस जगह पर पूर्व में स्थापित जॉर्ज ऑरवेल की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तब यहाँ के मौजूदा जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के तत्काल पहल पर इसे पुनः इसी जगह पर स्थापित कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह जगह आज भी वीरान पड़ा हुआ है। आखिर कब सरकार इस ओर ध्यान देगी? सिर्फ शताब्दी साहित्यकार के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर नमन कर लेने और तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ा लेने और श्रद्धांजलि अर्पित कर देने से ही सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब इस जगह का जीर्णोद्धार होगा, यहाँ संग्रहालय और पुस्तकालय बनेगा, साथ ही इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जी, तो हमारे सहयोगी सादिक की ये रिपोर्ट हम देख रहे थे। शाहरुख, हम सीधे आपके पास पहुंचते हैं। हमारे साथ लंदन से इस वक्त रिचर्ड ब्लेयर लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे शाहरुख की जो है इसके इन तमाम मुद्दों पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज रिचर्ड ब्लेयर साहब से उनके मन की बात जानना चाहेंगे कि क्या वो समझ रहे हैं। आज 118वीं जयंती है, ये उनके ये पुत्र हैं, महान शख्सियत, दुनिया के लेखक जॉर्ज ऑरवेल के। आज ये किस तरह से संवाद करेंगे मोतिहारी जो उनके फादर की जन्मस्थली रही। Okay, sir. So can you hear me? Yes. Clear, sir? Yes, I can hear you. Yeah, thank you so much. Sir, what's your opinion on this birthplace of Sir George Orwell? Means it has been in ruin right now, but it has been declared as a heritage by the government of India. But still, there is no step that has been taken for the improvement of the place. And what's your opinion on his birthplace, and how do you see it? Well, it's one of these projects that seems to have been going on for many years. I can understand the problems, of course. He only lived in Mutahari for 1 year, from his birth date to a year old when he left for England. And for you, of course, it's and I very much appreciate the fact that you are very proud of the fact that my father was born in Mutahari, because he has turned into such an iconic English author who has published, well, his books are being read by English-speaking people all over the world. I very much applaud what you are doing in Mutahari in memory of my father, and I appreciate that money is not something that can be found
every day, and obviously these things take time. But we have time on our hands, I guess, and I hope that it will continue to, to be turned into somewhere for people to go for as if not necessarily a shrine, but somewhere for people to understand and learn about his style of writing and what he had to say. Oh, okay. ब्लेयर सर कहना चाह रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इस तरह का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और इससे वो काफ़ी खुश हैं और इसी तरीके के प्रोग्राम आयोजित करने से कहीं ना कहीं जो वो जगह है, जिस जगह को बिल्कुल एक ऑर्फन हाउस की तरह छोड़ दिया गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। बट इनका कहना है कि समय लगेगा ज़रूर, लेकिन इफ नॉट दैट श्राइन, अगर ये कोई तीर्थ स्थल नहीं बन सकता तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह, एक म्यूजियम या कुछ ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि इन फ्यूचर उनको याद रखने के लिए काफ़ी होगा। जी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ लगातार विश्वजीत मुखर्जी, जिन्होंने जॉर्ज ऑरवेल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और वो काफी लोकप्रिय हुई, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर इकबाल साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर इकबाल साहब, हम आपके पास पहुंचते हैं। आज ये बड़े गर्व की बात है HTV न्यूज के लिए भी कि लंदन से इस वक्त रिचर्ड ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल के पुत्र, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सीधा हम उनसे संवाद कर रहे हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे? आपका प्रारंभिक प्रश्न क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? अच्छा, ओके ओके। It's an honor to be sharing the panel today with Sir Richard Blair, and on behalf of the HTV, on behalf of the people of Champaran and MS College Motihari, I offer my heartiest and warmest regard to Richard Blair, son of the great British author George Orwell. It's a historic day for the people of Champaran, sir, that you are addressing directly, even though in virtual mode, to the people of the place, which is proud of its association with two greatest personalities of the 20th century, the father of nation, our nation, Mahatma Gandhi, and George Orwell. It's like dream come true. So, sir, how do you feel to connect with the place where your father Orwell was born? So, could you just repeat that question again? How do I feel? Yes, how do you feel to connect with the people at the place where your father was born? How do I connect with these people? Oh, well, how do I feel? Well, yes. No, it is a great honor to talk to you, and also to the people of Mutahari, and I hope that they will continue to remember that he was born in Mutahari, and that he had a lot to say, and not his predictions, but a lot of people say that what he wrote in 1984 and certainly in Animal Farm about the problems of totalitarianism will resonate with you, with your democracy, and I hope that that you will continue to honor him in his birthplace. Okay, sir. Thank you. Sir, earlier, even the people of Motihari did not know that Orwell was born here. And I remember having read during my student life that Orwell was born somewhere in Bengal Presidency. The exact place was precisely not known. And as Shahrukh said, when some journalists from Britain came in the early 1980s, the world came to know that Orwell was born at Motihari. So, sir, can you please say, when did you come to know about this his association with Motihari, and he was born at Motihari? When did you come to know? And did he ever discuss? Did your father ever discuss Motihari's connection with you ever?
No, the answer to your second part of the question is no. He didn't ever discuss with me about where he came from. You have to bear in mind, of course, that I was 5.5 years old when he died in 1950. So those sort of conversations didn't take place. My recollection, or not my recollection, but my perception of where he was born is something that happened very gradually as I got older. And it was something that you read about it in the preface of books that he'd written. That Eric Arthur Blair, George Orwell, was born in Mutahari in 1903, and so on and so forth. So it didn't occur to me until I was much older, probably nearly into my teenage years, that it occurred to me that I understood where he had come from originally. But since then, of course, I've been in touch one way or another, and I've been following the progress, or perhaps not quite so much progress, but nevertheless things that you still recognize that this is where the man came from, and you are in many ways trying to do your best to keep his name alive in Mutahari. Okay, okay. Yes, over to Vishwajit or Shahrukh, will you sum it up? शाहरुख के हमारे जो हिंदी भाषी जो दर्शक हैं उनको आप बताएं कि जो है क्या सवाल हुए और क्या जवाब मिला शॉर्ट में। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर इकबाल सर ने जो सवाल पूछा था उनका ये जानना था कि इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं रिचर्ड ब्लेयर सर, और वो मतलब कि उनके फादर ने कभी इस जगह के बारे में उनके साथ कोई भी संवाद या कोई भी बातचीत की। तो इस पे ब्लेयर सर का आंसर था कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो वो 5 साल के लिए थे लगभग, और ऑरवेल साहब खुद भी सिर्फ 1 साल ही मोतिहारी में रहे थे, तो इसलिए उतना वो शायद ही अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस जगह से। यही वजह कहीं रहा हो जो उन्होंने मेंशन नहीं किया हो जगह के बारे में सर रिचर्ड ब्लेयर को। लेकिन रिचर्ड ब्लेयर सर को आने वाले समय में पता चला कि उनके फादर यहाँ से बिलोंग करते थे, और तब उन्होंने प्रोग्रेस चेक करना शुरू किया कि इस जगह का क्या स्टेटस है और क्या गतिविधियां चल रही हैं इस जगह पे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उन्होंने हमेशा नोटिस किया कि प्रोग्रेस क्या चल रहा है इस जगह पे। जी जी बिल्कुल शाहरुख, बहुत तमाम जानकारी के लिए और इस समाज के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विश्वजीत मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं। विश्वजीत मुखर्जी ने जॉर्ज ऑरवेल पर 2017 में जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और जो काफी मकबूल हुई, और मेरे ख्याल से संभवतः इसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए रिचर्ड ब्लेयर जो इस वक्त हमारे साथ लंदन से लाइव जुड़े हुए हैं, इन्होंने पहली बार अपने पिता के जन्म स्थान को देखा था। तो विश्वजीत मुखर्जी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे रिचर्ड ब्लेयर सर से? विश्वजीत मुखर्जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप देख लें जरा एक बार। It's an honor for me to share the panel with none other than the person himself. Mr. Blair, I did made a documentary film titled George Orwell in the Land of Satyagraha. Hope you have seen that film. Yes, I've seen that, the documentary that you sent to me. Yeah. And my question to you is, you haven't been to your father's birthplace. It's probably first time you have seen it virtually through my film, your father's birthplace. How did you felt about it? After watching the film, after watching that structure, after watching that bungalow where your father was born, how do you feel? How do I feel? That's a very good question. I'm not quite sure how am I supposed to feel. Very privileged to that was an excellent little video that you did, and it gives me a great pleasure to see where he was born. I suppose the real in reality, I'd like to see it looking a little better, but that's that's nothing to do with me. I would love to have.
love to come to Mutahari and see for myself. And it is something that within the Orwell Society that would certainly be something that we would consider if the circumstances were in our favor, that we would like to come out as a society with some members and come and see where he was born. I think that would be a great highlight of our society, that to do that. I think a lot of our members would be absolutely thrilled to be able to do that. I guess it would be quite expensive exercise for us. We're not all millionaires. We're just ordinary people who are very much in tune with Orwell's ideas and enjoy his writing. So but having said that, there would be many members who would jump at the chance to come out to Mutahari and see where he was born. So that from that point of view, we would love to do it. And Exactly. You are most welcome, and we are eager to see you visiting your father's birthplace in the coming future. And I also like to ask you that the Rotary Club of Motihari Lake Town, along with the help of the local government, has been trying its best to promote and preserve the George Orwell's birthplace. What is your message to them? well, I don't have any plans at the moment to visit. We have got many things to do, and I have other things to do as well. It is something that I would have to give serious thought to, and if the opportunity arose, I would certainly jump at the chance to come out and see where he was born. I think it is, dare I say, is it my duty? No, not my duty. That sounds too formal. It would be my great pleasure to come out and see where he was born, and to meet the people, like yourselves, and the people who live in Mutahari, and perhaps talk about my father to those who may be interested. Yeah. Sir, according to you, the Orwell birthplace should be developed in which form? Which form do you want to see your father's birthplace? So say Yeah, again. yeah. I wanted to ask you, according to you, the Orwell birthplace should be developed in which form? What can be done at the birthplace of George Orwell? Like the government is trying to do something, they are trying to make the park. They have plans to do something better. Like, what do you want? Oh, what do I want? Well, that's a difficult question to answer, because it is not in my power to, and it would be most disingenuous of me to tell your local government, or indeed your federal government, what you should or shouldn't do with my father's birthplace. That is a decision that I think must rest with you. Privately speaking, of course, I would be very honoured if his birthplace at the bungalow was restored to some sort of dare I say it, normality, as a house that could be lived in. But that is only my private opinion, and it is not for me to say whether it should or should not be done. That is for others to decide. Okay, sir. Sir, do you think being born in India, Orwell had its impact on somewhere in his life? As his ideologies were anti-imperialist, he wrote against totalitarianism. So, do you feel any kind of Indian impact over his life or something? To give back something? Are you saying? My question to you is, do you think being born in India, Orwell had an impact somewhere in his life? Indian impact? Well,
the fact that he was born in India and of course, his parents had lived there for many years. And of course, during the Second World War, when he worked for the BBC, he was involved in overseas broadcasts specifically to India on cultural matters. So I think he enjoyed doing that. His problem was that he wasn't absolutely certain that the people that he was talking to, these cultural programs, that they were hearing him properly. And it went on he worked for the BBC for 2 years, and then decided to leave and do something else. So I think he probably always had something in his mental background that attracted him to India, because after all, he joined the Imperial Indian Police Force and went out to Burma as a policeman. So yes, I think there was obviously something there that would attract him back to India. I think he would like to have gone back had he been stronger and had he lived a little longer. Yeah, we all know that he liked Indian tea. He loved Indian tea. Indeed, very much so. Very strong Indian tea. They wrote an essay also. A cup of tea. Yeah. Sir, you were saying something, sir. Vishwajit, I have a question for Professor Quint. Yeah, sure. Go ahead, Professor. Yes. Sir, very warm welcome to Professor Quint, sir, President Orwell Society. Sir, I have one question for you, that usually the writings of the British authors are marked by colonial bias, and there is this whole theory of East-West conflict. And we remember Kipling's famous phrase, white man's burden. But Orwell, to me, is an author who had the courage to denounce imperialism and expose its darker side. I remember his quote, I was in the Indian police for 5 years, and by the end of that time, I hated the imperialism I was serving. I had been part of an oppressive system, and it had left me with a bad conscience. So my question is, where did this courage in Orwell come from? This courage to expose imperialism, of which he was himself a part. Where did this courage came in Orwell? Well, an interesting question. I think that the genesis of his dislike of imperialism came, of course, when he was a policeman in Burma. He realized that the British ruled in many countries, and they ruled for their own benefit and their own purpose. Although they left behind in other countries an infrastructure of law and civil service and roads and rails and so on and so forth. But nevertheless, the point of imperialism was that the British people or the British government took out what it required. And it was while he was, as I was saying, as a policeman, he saw the other side and disliked very much what he had to do in order to keep law and order amongst the Burmese, because he knew the Burmese disliked the British very much, and did everything they could to make life difficult. And I think this was the genesis of his future writing, that everything he wrote, which was reinforced, by the way, later on when he fought in Spain during the Spanish Civil War, that he became what one might call, or what he called himself, an old-fashioned socialist.
but he then discovered that totalitarianism was something that it was really he couldn't abide. He thought, because of his experience that he had in Spain, which I think had started many ways had started in Burma as a young policeman, and thereafter everything and as he said in as he recorded, everything I have written against totalitarianism as he Yeah. understood it. Oh, yes. Yes. इकबाल सर, कुछ Okay. ऑडियंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस वक्त Abhishek. दिल्ली से हमारे साथ मशहूर पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार अनुरंजन झा जी भी जुड़े हुए हैं और लगातार कई सारे क्वेश्चंस रिचर्ड ब्लेयर जी के लिए पूछे जा रहे हैं। शाहरुख काइंडली समराइज कर दे पहले जो बातें हुई, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। जी जी। और उनसे सर से ही बात करने ऑरवेल सोसाइटी। जी शाहरुख पहले समराइज कर दे मेरी बातें और इकबाल सर की बातें। मेरे सवाल और इकबाल सर के सवाल के जवाब समराइज कर दे काइंडली। जी 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 जरूर जरूर। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि विश्वजीत सर ने जो सवाल किया था रिचर्ड ब्लेयर सर से, उनका पूछना था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो विश्वजीत सर ने बनाया था जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर, उस पर उनकी क्या राय है। तो इस पे ब्लेयर सर ने रिप्लाई किया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अभी भी उनके फादर के बर्थ प्लेस के बारे में कोई तो दिखा रहा है, उनको ये बहुत पसंद आया और इन फ्यूचर वो इसको और भी अच्छे स्टेटस में देखना चाहेंगे। और उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वो इस जगह को विजिट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, खुद से देखना चाहते हैं और ऑरवेल सोसाइटी, ऑरवेल फाउंडेशन को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि इन नियर फ्यूचर वो इस मतलब कि नॉट गवर्नमेंट के यूज से नहीं बट पर्सनली, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि वो एक साधारण इंसान है। मतलब वो इस बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे कि वो एक बड़े ब्रिटिश ऑथर के बेटे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक साधारण इंसान है और वो ऑरवेल फाउंडेशन, ऑरवेल सोसाइटी सबके थ्रू सबसे मिलजुल कर कुछ स्टेप लेना चाहेंगे, लेकिन अभी उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट इन फ्यूचर वो ऐसा कुछ करेंगे। फिर आने के बारे में जो उन्होंने बात कही है, तो ये अनुरंजन झा जी का सवाल भी है कि मोतिहारी विजिट करने का उनका इरादा है, अगर है तो कब का है। अनुरंजन झा सर के जो सवाल हैं उनके, मुझे लगता है कि उन 2-3 सवालों के जवाब ऑलरेडी जो है रिचर्ड ब्लेयर सर ने दे दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने बता दिया सर कि अभी फिलहाल उनका विजिट करने का कोई प्लान नहीं है, बट फ्यूचर में वो आगे देख रहे हैं कि वो ऑरवेल फाउंडेशन या ऑरवेल सोसाइटी सबको इन्वॉल्व करके अगर आ सके यहाँ पे और इस स्टेटस मतलब इस जगह का जायजा ले सके, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब उनकी इच्छा है यहाँ पे आने की। जी इकबाल सर उसको समराइज करें। जी इकबाल सर ने मतलब बहुत ही टिपिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा था कॉलोनियलिज्म पे और इंपेरियलिज्म पे। तो इस पे रिचर्ड ब्लेयर सर का कहना है कि जब बर्मा में एज अ सिविल सर्वेंट काम कर रहे थे जॉर्ज ऑरवेल सर, तो वहाँ पे वो बर्मीज पुलिस में थे, तो वहीं से कहीं ना कहीं जो डबल थिंक जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने 1984 नोवेल में भी, कि उनको डबल टॉक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का समझ में आया कि एक साइड वो कुछ कर रहे हैं और लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको पता चला और उनको धीरे धीरे घृणा होने लगी इस पूरे इंपेरियल और टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट से। तो इसीलिए वो पहले तो एक लीव छुट्टी लेके वापस गए थे ब्रिटेन और बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया इस जॉब से। और उसके बाद पूरा जग जाहिर है कि उन्होंने इसके बाद क्या लिखा। उन्होंने सारा कुछ जो भी उन्होंने लिखा वो टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट ही था। वही रिचर्ड ब्लेयर सर भी कह रहे थे कि उन्होंने बाद में जो भी लिखा वो सारा टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। ये हाँ, एक माय क्वेश्चन इज फॉर प्रेसिडेंट ऑरवेल सोसाइटी सर क्विंट if I'm not wrong. I'm asking this question.
आवाज जा रही थी? बिल्कुल आवाज जा बिल्कुल रही है? अच्छा, बिल्कुल दिस बहुत क्वेश्चन, बोल्ड आ रही है, थोड़ा सा कम भी थोड़ा आवाज को धीमा भी किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, this question is for the president of Orwell Society, Mr. Quinn. Sir, Mr. Quinn, sir, you are welcome to this place also, along with Richard Blair, sir. I have one question for you. That as far as I understand Orwell, although not a virulent anti-capitalist, he did believe that only with gradual introduction of socialist ideas and practices would the poor actually come to share in the fruits of the nation's prosperity. Therefore, don't you find it unjust with him to limit his animal farm as a mere satire of the Russian Revolution? It is said that even CIA used it as a propaganda tool against Russian Revolution. So that limiting animal fire to being just a satire on Russian Revolution, isn't it limiting Orwell's capacity and Orwell's ideas? He was basically a socialist. So, sir, please, your answer, sir. The the satire that's in Animal Farm, while it clearly is close to the Russian Revolution, is Yes, applicable to any situation like that. That was what he was writing about at the time, but the message is eternal as far as revolutionary movements are yes, concerned. yes, yes. So it's also that one Orwell in one of his essays says that all art is propaganda, and obviously the political strain in his work, in his writing, is too obvious. Now, perhaps one reason why Orwell has not been at the forefront of literary and academic discussion and has been ignored the fact that he made art out of politics. So, what is your comment? What is your comment? Because you are there associated with Orwell Memorial Society. Well, I think he has been ignored, and he. so I didn't really understand the question. Sorry. Sir, Orwell, I think Orwell has been ignored and he hasn't been on the forefront of academic discussion because of the political overtone of his work. He himself said that I am making art out of politics. So, is it so? What is your comment? Well, his writing is very clear, and he expresses his point of view in a very accessible way. That's part of the wonderful talent that he had. Um, as far as his political views are concerned, they were also, as he said, in favor of democratic socialism. Yes. Shahrukh, can you please summarize it? Yes. शाहरुख जी Okay. जी जी जी, बिल्कुल। आप इसे तो अपने दर्शकों हिंदी में आप को ब्रीफ कर बताना दें। चाहेंगे जी जी कि इकबाल सर का जो सीधा सवाल था वो अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कि एनिमल फार्म में उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था जॉर्ज ऑरवेल जी साहब ने।
और उसी तरह उनके अन्य जो लेखन है, जो भी ऐसे हो, सब में उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन इन सबों पे अटैक किया था। तो क्या उनके राइटिंग को सिर्फ रशियन रिवॉल्यूशन तक हम सीमित कर सकते हैं, या उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ और भी कहने का कोशिश किया? क्योंकि उनको हाईली मीन्स उनको इग्नोर किया गया है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टोन इतना ज्यादा था उनके लेखन में कि उनको इग्नोर किया गया समय पे। तो इस पे क्विंटन सर का रिस्पांस था कि क्योंकि वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करते थे और उनका मानना था कि मतलब उनको हम सीमित नहीं कर सकते, कि उनका जो सटायर था सिर्फ रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर था, कम्युनिज्म के ऊपर था, उससे ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें आज भी याद करते हैं, क्योंकि उनका जो भी लेखन था वो आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना 1950 के टाइम समय में था। जी जी शाहरुख, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे ख्याल से। वो जो जो जिन लोगों ने भी जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ा है उनके जहन में ये चीज़ आता होगा इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि 1984 जो उन्होंने किताब लिखी थी 1948 में, यानी कि 48 में उन्होंने 84 के सिचुएशंस और हालात की कल्पना की थी, और इवन कि आज की तारीख में वो 1984 जो किताब है वो बिल्कुल परफेक्ट आज के सिचुएशन पे बैठती है। तो ये जो प्रेडिक्शन था, ना कि 1984 का बल्कि आज के हालात में भी जो उस किताब के जरिए जो प्रेडिक्शन था वो चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो प्रेडिक्शन उन्होंने इतने सालों पहले करी थी, तो इस तरह के प्रेडिक्शन को लोग जो है जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें किस तरह से देखते हैं, और जाहिर सी बात है इन्हीं वजहों से उन्हें एक महान लेखक के रूप में जो मिलेनियम राइटर का जो है खिताब दिया गया। तो क्या इस तरह की जहनियत जो है, चूंकि रिचर्ड ब्लेयर साहब फैमिली मेंबर्स थे, तो अपने फादर के ज़माने कुछ ऐसी चीज़ों को आप उनसे पूछें कि जो है और फिर उसका सम भी करें। जी ओके, so Richard Blair sir, my question is that yeah sure, my question is that while writing 1984 Orwell sir has a kind of, he has given a prophecy that a world which is about to approach, he has written that about this particular work in about this particular world in 1948. He has written this particular novel 1984, which was a kind of prophecy. But right now in the contemporary and present time, we do find its relevance in the present time, that whatever he has said, our society is somehow changing to that particular dystopian society which he has mentioned in the 1984. So what's your view? Because many of the scholars and critics nowadays, they are talking about this prophecy that this dystopian world has arrived now. So what's your view on that? Well, when he wrote 1984, which was in 1940, by the way, just as a little story, I feel that the title of 1984 was not because he wrote it in 1948 and simply turned the date round, but I think, in fact, it is quite possible that he called it 1984 after a poem that his first wife wrote called Towards 1984. And I think it was a tribute to her that he decided to call it 1984. So that's my little story there. But the point about the book is that he was writing about totalitarianism. He was writing about, it doesn't really matter where you are as a normal member of the human race. It doesn't really matter from what direction you are being controlled. It doesn't matter whether it's on the extreme left or the extreme right. It is still, you are still being subjugated by higher authority, as it were. And I think he was really, what he was writing about was trying to warn people to be aware of what governments of whatever color or hue, whether we're left or right, whatever governments were trying to do to
to control the population, it didn't really matter. As an ordinary member of the human race, it matters little to you or me who is controlling you, whether it is left or right. It is still authoritarian, and I think that is what he was really trying to warn us about: to be on our guard by being controlled by people who were trying to were getting power mad, as it were, and sometimes politicians get a little bit carried away. Okay, जी Shahrukh, बिल्कुल summarize करें. जी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो सवाल था कि 1984 नोवेल जो उन्होंने लिखा 1984 वो आप अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में कितना हद तक वैलिड है। तो इस पे रिचर्ड ब्लेयर सर का कहना है कि जो उन्होंने एक प्रिडिक्शन या प्रोफेसी जो उन्होंने लिखा था वो अभी भी वैलिड है, क्योंकि लेफ्ट राइट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हायर अथॉरिटी पे कौन है, वो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कोई वर्कर हो या फिर गवर्नमेंट खुद से इम्पोज कर रहा हो अपना सुपीरियरिटी हमारे ऊपर। तो हमें लेफ्ट विंग और राइट विंग से मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटी है वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और उसी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल साहब ने लिखा था 1984 नोवेल में, और वो कहीं ना कहीं आज के समय में बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि आज भी चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ईस्टर्न वर्ल्ड हो या फिर हमारा खुद का कंट्री, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है एक कानून थोपा जा रहा है जो कि ऑलरेडी उन्होंने 1948 में ही लिख रखा था। अपने फादर से उन्होंने लेखनी का कुछ गुण लिया है। रिचर्ड ब्लेयर साहब से पूछे कि इनके शौक क्या है, जरा हम लोग He was only 5 when Orwell died. नहीं, he could not नहीं, कुछ जो है जेनेटिक चीजें इनके अंदर आई हैं उस तरह की लेखनी से जुड़ी हुई। शाहरुख okay yeah sir, Richard Blair sir, do you have anything to say about the writing career of your father and how much it has influenced you? Do you wanted to be a writer in future? Oh yes, well, as far as the question about being a writer, fortunately or unfortunately, depends how you want to look at it, being an adopted child, of course, there is no DNA connection between myself and my father, so therefore I am quite glad. I do a little bit of writing, yes, but I am not a writer. So if I had been a real son of George Orwell, and I took up writing, everybody would compare my writing to his, and I think it would be very, very almost impossible to live up to the quality of my father in his writing. His writing was so clear, a great clarity of thought, and simple prose that anybody could understand, and his ability to express himself in such a way that it left no room for interpretation, and I think that is the wonderful thing. His observation is extraordinary. He was very, very. He had an enormous range of knowledge about all sorts of things, about nature. Perhaps politics was a little bit. Some people have criticized him for his politics a little bit. I don't think he was a politician, but he understood how politicians thought. So I forgot what the first part of the question was. How do I view his writing? Well, I have to say, obviously, as his adopted son, I think he is one of the more significant writers of the 20th century, and possibly still is a significant writer in the 21st century. And I think he will continue to be read for years, for decades to come, because he had something to tell us. And that is
be aware of what goes on around you and be aware of being manipulated by others. Exactly, sir. समराइज करो शाहरुख, उसके बाद एक जी, सवाल मेरा। रिचर्ड ब्लेयर सर कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने मतलब ऐसा सोचा नहीं कभी कि उनको भी राइटर ही बनना है, क्योंकि अगर वो भी एक लेखक बन जाते तो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो उनके लेखनी को और उनके फादर के लेखनी को कंपेयर करना शुरू कर देते, और इससे क्या होता है कि वो कभी भी अपने फादर की, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो कभी अपने फादर की बराबरी नहीं कर सकते। अगर बात लेखन की हो रही है, राइटिंग की हो रही है, तो वो कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन उनका विचार है कि अगर वो लिखते तो ऐसा कुछ होता, समाज वाले इस तरह से इंटरप्रेट करते। और उन्होंने मतलब कि जॉर्ज ऑरवेल के लेखन पे, उनके राइटिंग्स पे बोला कि उन्होंने समाज को एक वार्निंग दिया था, एक मैसेज दिया था कि अभी से अगर हम संभल गए तो बहुत अच्छा, वरना जो उन्होंने 1984 नोवेल 1984 में लिखा है वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आ जाएगा वैसा समय। तो उन्होंने एक वार्निंग दिया था लोगों को सुधरने के लिए। शाहरुख, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें 2008 में रिचर्ड ब्लेयर ने जो है अपने तमाम बिजनेस को त्याग करके और अपने फादर के जो भी जॉर्ज ऑरवेल सोसाइटी के लिए और ट्रस्टी वगैरह के लिए जो है काम करना शुरू किया। तो क्या लगा इनको 2008 में कि इन्होंने अपने तमाम कामों को छोड़ करके, जो भी है जिनको जो भी इनका प्रोफेशन था उसको छोड़ करके ये उस दिशा में मूव किए? Okay. So, sir, Richard Blair, why you have dropped your career as a businessman and you have devoted your time for preserving the memory of your father? What came to your mind that you all of a sudden you have left your career as a businessman in 2008? Oh, because I had retired. I had a business for a number of years, and I sold it in 2008 because my two children didn't want to carry on. So I thought, well, this is a good moment to sell it. So having sold it, then it coincided with really my becoming more involved with, first of all, the Orwell Foundation, which is to do with the Orwell Prize. The Orwell Foundation was set up in really after Bernard Crick had written the biography called A Life back in 1979, which was the biography of my father. This then morphed into, over the years, into the Orwell Foundation. Now, the Orwell Foundation is not a membership organization. It is simply a series of trustees, of which I am one, which is there to oversee the Orwell Prize for literature and journalism, and also for schools, the Orwell Youth Prize. The Orwell Society is quite separate from the foundation, and I became involved in that in 2010. And the Orwell Society was started as a society with a membership for the appreciation of what Orwell had, of Orwell and his writing. And the purpose of the society is, as we say, my chairman, Quentin Kopp there, who runs the society. What we do, of course, is we take our members to various places that are related to Orwell, where he lived, and we have various events to celebrate his life. And as I said earlier on, I would like to think that we maybe one day might be able to get out and see his birthplace. That would be a great privilege and a pleasure. I have been to India some years ago on holiday, but to come out to Mutahari, I think, would be a highlight of the society. And we all live in hope that this may happen one day. So really, the answer to your question is I simply had retired from the business that I was in
and devoted my time to the memory of my father. It's better than sitting at home doing nothing. ओके सर। Okay. So, Summarize करो शाहरुख। प्लेयर सर कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बिजनेस छोड़ा क्योंकि वो तब तक रिटायर हो चुके थे, और उसके बाद ही मतलब बिजनेस में से जब तक वो जुड़े थे तो वो अपने फादर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जब वो बैठे हुए थे तो बिजनेस से रिटायर होने के बाद तो उसके बाद उन्होंने ऑरवेल फाउंडेशन और ऑरवेल सोसाइटी से जुड़ने का फैसला लिया, और कहीं ना कहीं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने। और ऑरवेल फाउंडेशन जो है वो किसी मेंबरशिप के तहत काम नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड जो ऑरवेल सोसाइटी है वो मेंबरशिप वाले एक तरीका है मेंबरशिप लेने का, उसके अनुकूल काम करता है ऑरवेल सोसाइटी। और इन दोनों के मदद से उन्होंने एक तरह से बहुत सारा, जैसे ऑरवेल प्राइज जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इनके ही प्रयासों से वो चाहते हैं कि वो मोतिहारी एक दिन विजिट करें और कहीं ना कहीं इस जगह को भी देखें, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया विजिट कर चुके हैं हॉलीडे पर्पज से, लेकिन वो बर्थ प्लेस पे नहीं आए हैं कभी। तो वो जो जन्म स्थल है ऑरवेल का, वहाँ पे वो आना चाहते हैं, उनकी यही इच्छा है। जी विश्वजीत जी। या बहुत बहुत शुक्रिया अंसारुल सर मुझे मौका देने के लिए। मिस्टर ब्लेयर, I have a very important question for you. Yes. Yeah, your father's birthplace is also known for Gandhi, on whom he wrote a critical analysis essay titled Reflections on Gandhi. Sorry, I missed the point of the question. Yeah. Let me repeat the question again. Your father's birthplace is also known for Gandhi. Yes. Mahatma Gandhi, the father of the nation. And your father had written a piece of article on Gandhi titled Reflections on Gandhi. It was a very critical analysis. How do you see about it? Oh, well, I have to say it's such a long time since I read that. I mean, there is so much of all that I have read, which such a long time ago, I would have to go back and read it all over again. Yes, his essays and his writings, I don't think they're critical, but he understands and he understood what Gandhi stood for. And I think he was very sympathetic with Gandhi's thoughts. So, but as I say, unfortunately, I have not read that one for some little time. So I'm not really in a position to give you a very specific answer. Okay, fine. My second question is to the president of George Orwell Society. Sir, as discussed above, as discussed earlier with Richard Bear, sir, is Orwell Society wants to work in Motihari to promote the George Orwell's birthplace? Shall the Indian people, shall the Motihari people, shall we start approaching the government that the Orwell Society wants to join and work with us to promote the birthplace of George Orwell? If I understood that one, anybody can in the world can join the Orwell Society. We will be more than welcome. And if there are people in Mutahari like yourselves who would like to join the society, you would be more than welcome to do so. And we have members who live all throughout the world, and to have all society members from India would be give us great pleasure. And I hope that you might like to join us, because I think you would get a lot from it. The biggest, of course, obviously, the biggest problem at the moment is that we can't do anything physical because of the pandemic that we are going through at the moment. And dear God, I hope it goes. We come out of it sometime soon. And with
with our membership, then we can do things. We would like to come and see you, and we would like to see you in England, where we can show you some of the things that Orwell, where he lived and what he did in later life. So I hope that we will see your names on the membership list. Yeah, it will be a great pleasure. As it was earlier decided by the government had plans to develop the Orwell birthplace into a great museum. Orwell Museum. They wanted to develop into it in an Orwell Museum. So, are there any things like relevant things of George Orwell, your father, which can be kept here in the Orwell Museum? I'm seeing questions coming up in front of me here. Would you like me to answer them? Yes, sure. Yeah. Yes, sure. Okay. The All Award is given in famous College of Eton, but not for overseas trip. Well, it's just something. I mean, we haven't been going for so many years that we've got around to doing that. My father went to Eton, and Eton are, very keen to recognise their famous son. And yes, we have limited resources at the moment. I see there's another question here. Why Homage to Catalonia is not so famous as Animal Farm? Well, there is an interesting point. Of course, Animal Farm was a fable, a story. Homage to Catalonia was, in fact, my father's experiences in Spain. And I think it's an extremely interesting book, nevertheless, a very honest opinion of what he saw in his limited time in Spain during the Spanish Civil War. Many people have criticized him for not understanding what went on in Spain. In fact, he makes it very clear at the beginning of Homage to Catalonia that, in fact, he is only reporting on what he saw and his experience in Barcelona and out in the Aragon countryside. So I think it's very unfair of people to criticize him for not understanding what was going on. He understood actually a lot more than people will give him credit for. But there we are. Animal Farm somehow was a book that really resonated with people, especially young people, and it just became. After it was published, it just became more and more famous. Shahrukh. जी जी, ये जो एक सवाल था कि होमेज टू कैटोलिना जो है ये एनिमल फार्म जितना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, तो इस पे ब्लेयर सर का कहना है कि होमेज टू कैटोलिना कहीं ना कहीं एक बायोग्राफी था, उनका ऑटोबायोग्राफी, जो कि स्पेनिश सिविल वॉर के समय उन्होंने फेस किया था, जो एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने साझा किया। और एनिमल फार्म जो था वो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन पे अटैक था एक एनिमल फेबल के थ्रू, तो इसलिए उनका कहना है कि वो एक जेन्युइन ओपिनियन था होमेज टू कैटोलिना, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एनिमल फार्म जितना, लेकिन एनिमल फार्म क्योंकि एक फिक्शन है शायद इसलिए हम उस पर ज्यादा महत्व देते हैं, और वो ऑटोबायोग्राफी है इसलिए उसको कम महत्व देते हैं। मेरे ख्याल से एक सवाल ये भी पूछ लेना चाहिए कि आज जब 118वां जयंती है उनके फादर की, तो आज रिचर्ड ब्लेयर साहब का एंगेजमेंट किस तरह का है, क्या क्या आज किया जा रहा है, उनका जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से क्या किया जा रहा है, या फिर वो खुद जो है, या फिर उनकी जो पूरी टीम है उनके द्वारा आज क्या क्या स्पेशल है? Sir, my question is for both of you, Quentin Kopp sir and Richard Blair, both of you, that on the occasion of this 118th birth anniversary of Sir George Orwell, what your trust like to do? Means, are you engaged in some kind of program or something that you are organizing on the behalf of his birth anniversary? I will let Quentin answer that question, since he is also the gentleman who organizes all our events
Yeah. I'm afraid I'll let Quentin answer that. सर की आवाज Well, जी बोलें one of the events we have hear every Can you year talk, sir? is a visit to where Orwell is buried in Oxford on the nearest Sunday to his birthday. Unfortunately, this year, the COVID. Can you hear me? Can you hear me? We have an event every year, but this year we haven't been able to have significant anniversaries of both his work and him. Were you able to hear that Quentin's answer? या जैसा मैं समझ पा रहा हूँ क्विंटन सर का कहना है कि वो ऑर्गेनाइज कुछ करते हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं वो जो उनका एक प्लान था वो इस बार शायद नहीं हो पाया, और आगे वो सोच रहे हैं कि आगे कुछ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोविड सिचुएशन की वजह से ये प्लान जो स्थगित कर दिया गया, एज पर एज आई अंडरस्टूड। जी जी जाहिर सी बात है मोतिहारी में भी उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। जी प्रोफेसर इकबाल साहब। Okay, I have one question for Mr. Quentin. Sir, being secretary or president of Orwell Memorial Society, you must have been deeply associated in various ways with various kinds of academic activities. What is the state of academic study and research work on George Orwell there in Great Britain? What kind of work, research work are being done in Britain on George Orwell? Well, that's a very, very big question. There are many major centres of Orwell studies in Britain. One is at Birmingham University, which is having a 3-day academic symposium next year. UCL, University College London, where the archive is, has a lot of studies. Most of the major universities are doing original research on aspects of Orwell and his work. It's very, very current because it continues to be so relevant. And we have among our members a number of very famous academics from England, from Australia, from America, including, of course, Peter Stansky, who was one of the founders of the society. Okay, sir. For your information, I at my college, MS College Motihari, organized a national seminar on Orwell in 2016, in which hundreds of scholars from all across the country came, and very soon one of my books is going to be published. It's in the press on Orwell, making art out of politics, new perspectives on Orwell. So this is a collection of this is a collection of papers which were presented in that seminar, and several other information about Orwell I have provided. It will be out very soon. Well, congratulations. Very soon. That will be a wonderful occasion. Thank you, sir. Thank you. Or Bishwajit. Yeah. Yes. We are शाहरुख अब समाप्त करना है, खत्म करना है जी शाहरुख। Okay. So
As we have already discussed, we have discussed about the ideologies that has been started by जॉर्ज ऑरवेल. तो हमने उनकी विचारधारा पे बात किया इस डिस्कशन में, इस पैनल डिस्कशन में. उनके जो विचार थे वो कैसे आज भी उतने ही एप्लीकेबल है जितने उनके समय में थे, और कैसे उन्होंने मतलब ये जो टोटलिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म या फिर इंपीरियलिज्म, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा था. वो उनके सपोर्ट में नहीं थे बल्कि खिलाफ में थे. तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि जो भी उन्होंने लिखा वो ऐसा नहीं कि हम जो गोरे और काले और ईस्ट और वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, इसमें ज़्यादातर टाइम हम उनको ईस्ट से नहीं जोड़ते हैं, उनको वेस्टर्न कंट्री से जोड़ते हैं और उनको ऐसा सोचते हैं जैसे वो भी बाकी गोरों की तरह थे. लेकिन ऐसा नहीं था. जॉर्ज ऑरवेल साहब ऐसे नहीं थे. उन्होंने ये पेन, ये जो दर्द है जो भारत या फिर कोई भी कॉलोनी जिसने फेस किया था कॉलोनियलिज्म के टाइम में, तो उस समय में जो से भी कंट्री थे, उन्होंने जो भी फेस किया था उनके अगेंस्ट उन्होंने लिखा. वो कहीं से ब्रिटिश का पक्षपात या पक्ष नहीं ले रहे थे. वो उनके अगेंस्ट लिखने के लिए तैयार थे, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है. आर्ट इज करेजियस. तो उन्होंने अपने आर्ट के माध्यम से खुद का करेज दिखाया. तो कहीं ना कहीं हम रिचर्ड ब्लेयर और क्विंटन सर से इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया. और आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे कि वो ऑरवेल सोसाइटी या फिर ऑरवेल फाउंडेशन किसी भी तरह कोलैबोरेट करके कुछ ऐसा कर पाए ऑरवेल के जन्म स्थल पे, जिससे ये जगह यादगार हो जाए हमेशा के लिए. बिल्कुल. आखिरी सवाल ये भी पूछ लें सारों के, HTV न्यूज ने आज जो ये इस तरह का पैनल डिबेट इस तरह का ऑर्गेनाइज करके और उनसे जो है तमाम उनके विचार साझा किए उनके पिता की जन्म स्थल से, तो चूंकि ये HTV न्यूज भी जो है यहाँ का स्थानीय चैनल है, तो इस पर भी उनकी प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए. Okay, so I would like to ask you, Sir Richard Blair, sir, that how do you view this, that we have organized this session through the medium of local news channel HTV News. We have organized this session on the birth anniversary of Sir George Orwell. How do you look at this, and what do you expect us to do in near future? So, if I understood, what do you expect from the society in the future, or from Orwell in the future? Yeah, from this particular STV News that has organized this session. This is a local news channel here. Oh, I see. Which is based at HTV. Motihari. So, what do you expect us from? From your HTV News. Well, I'm not sure what I was expecting really. Is this going out live, or is it to be? Will it be, edited? I it's think already live, sir. It's live. Well, I applaud you. I think it is something. I guess you've not done anything like this before, and I think it's marvelous. I'm absolutely, I'm in awe of your. You've done a lot of work on this, and I very much appreciate the time you have taken to put this all together, and to to invite myself and my colleague Quentin Kopp to join you, and I thank you very much indeed. Your last message, sir, for Motiharians. Richard, sir. Sir, if you have any message that you want to convey to the people of Motihari, the birthplace of George Orwell, if you have any message that you want to convey. What would I like to say to the population of Motihari? I think really that one ought to try and follow the principles of my father in regard of
that he was a democratic socialist, as it were, to follow his political thoughts, and also to question, I think, the politics of governments, and make sure that you're not being, because they governments do like to tell strange stories and not quite lies, but they like you to believe what they're telling you. So you have to be aware of what's being said. What else can I say? I hope Exactly, that sir. people The will government get to want know. exactly, We'll get sir. to They know want to more better. manipulate us. Government want to manipulate us, and that is the reason why we need the works of Orwell, and that is the reason why we need to follow his ideologies. Exactly. And before Shah Rukh sums up, it was really an honorable moment for the whole country to have you both on the panel of HTV News on the 118th birth anniversary of George Orwell, and we are looking forward to see you, to receive you both here at the birthplace of your father, and then we'll do something together. We'll join hands with the Orwell Society and do something together. We are expecting many more things to do in the coming future. Thanks a lot for joining us, Mr. Richard Pearson and Mr. Quen Pop, sir. Thanks for giving your valuable, precious time to the Indian news channel HTV News. I guess it's for the first time in the history of India that we have received George Orwell's son on our online discussion platform. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Well, may I say thank you very much indeed to all your listeners and to you, gentlemen. It's been a pleasure to join you, and a pleasure and an honor to join you on this program. And I hope that what we have been able to tell you has been of some sort of use, and let us hope that one day we will actually meet and be able to shake hands properly. We are looking forward to see you here, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you. Ansarul ji, sum up करेंगे. Most welcome. जी सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी व्यस्तता के बावजूद आज चूंकि उनका जयंती है उनकी, तो बहुत सारी जो है उधर बिजी शेड्यूल होगा, इसके बावजूद भी उन्होंने HTV न्यूज के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में खुद शामिल हुए, बल्कि अपने चेयरमैन जो ऑरवेल सोसाइटी के हैं वो भी शामिल हुए। उनका रिचर्ड सर, आपका प्रोफेसर इकबाल हुसैन सर, आपने भी बहुत कीमती वक्त निकाला, आपका विश्वजीत जी और शाहरुख साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया HTV न्यूज के इस पैनल चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से रिचर्ड ब्लेयर साहब से बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, बहुत सारे जो क्लियरिफिकेशन थे, और ये रियली HTV न्यूज के लिए प्राउड मोमेंट था कि इस तरह की शख्सियत हमारे साथ जुड़े और लंदन से सीधा जुड़े और तमाम मुद्दों पे बात हुई। मोतिहारी की धरती जो 1983 से पहले इस बात से अनजान थी कि जॉर्ज ऑरवेल की यह जन्मस्थली है, बाद में जब इस बात की चर्चा हुई उसके बाद से इस जगह का इम्पोर्टेंस बढ़ा, और इसके बाद से लगातार यह जो है सुर्खियां पूरे देश में बटोरती रही यह जगह। मोतिहारी के सत्याग्रह शताब्दी पार्क के पास गोपालसा हाई स्कूल के नजदीक जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है। लेकिन इन सब के बीच एक तबका ऐसा भी है समाज का जो इन चीजों को, चूंकि जॉर्ज ऑरवेल एक अंग्रेज थे तो इस वजह से वो विरोध भी करते हैं। लेकिन जो जॉर्ज ऑरवेल को ये कहा जाता है कि जो जॉर्ज ऑरवेल को नजदीक से नहीं जानते हैं, उनकी किताबों को ठीक से पढ़े नहीं हैं, वो लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं। अगर उनके विचारों को अगर वो समझेंगे, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके हिसाब से दवायर की रिपोर्ट थी, जिसके हिसाब से गांधी जी और जॉर्ज ऑरवेल के विचारों में कई मुद्दों पर समानता देखी गई है। तो ये सब तमाम तरह के डिस्कशन है जो किए जा सकते हैं, लेकिन आज
लंदन से हमारे खास मेहमान रिचर्ड ब्लेयर जुड़े, उनके जो चेयरपर्सन हैं क्विंटिन कोप जुड़े, विश्वजीत जी, इकबाल सर, शाहरुख सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया HTV न्यूज के लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम खबरों HTV न्यूज के साथ। थैंक यू। थैंक यू। We may sign off. Thank you.